Hello student, today I will take the new topic pollination. Pollination is the previous event of the fertilization. Previous event of the fertilization basically pre-fertilization formation of male and female gamete. Formation of male gamete process called the microsporogenesis and formation of female gamete that's called the process called the megasporogenesis. But the topic is the pollination. Pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का डिस्पर्स करना पॉलिनेशन कहलाता है. विदाउट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन विल बी नॉट अकर. बिना पॉलिनेशन की फर्टिलाइजेशन नहीं होता. देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली अकर इन अ सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है, द कंडीशन इज सेल्फ पॉलिनेशन. फ्लावर इज अ मोनोसियस इन कंडीशन. मोनोसियस मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर. अगर फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा. देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. फर्स्ट इज कॉल्ड द ऑटोगैमी, नेक्स्ट इज कॉल्ड द जेनेटोगैमी. ऑटोगैमी मीन्स ट्रांसफर्स ऑफ pollen grain from anther to stigma in a same flower. ये फिगर में दिखाया गया है. ये है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये है स्टमन और दिस वन इज कॉल्ड द एंथर. ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma in a same flower, that is called the autogamy. In autogamous in condition, that means the pollination occur in a same flower. Male and female reproductive part are present in a same flower. Pollen grain are dispersed from anther to stigma. That is called the autogamy. And genetogamy means transfers of pollen grain from one flower to another stigma in a same plant. एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में pollen grain का एक जगह से दूसरी जगह स्टिग्मा पर जाना, that is called the genetogamy. Genetogamy is also type of a cell pollination. And cross pollination. The cross pollination also called the genogamy. Genogamy. Underline here. Genogamy. Cross pollination, they need to different plant. And pollen grain are dispersed from anther to stigma to another plant of the same species. यहाँ से एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का डिस्पर्स होकर दूसरे के स्टिग्मा पर पहुंचना, अलग अलग फ्लावर, इंडिविजुअल अलग अलग फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है. क्रॉस पॉलिनेशन नीड बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट. बिना किसी एजेंट की मदद से पॉलन ग्रेन कैन नॉट बी डिस्पर्स फ्रॉम हियर टू देयर. Pollen grain are dispersed from here to there by means of abiotic and biotic agent. Biotic agent means by insect, by bird, by man, by anything which is biotic in nature. And pollen grain are dispersed from here to there, that is called the biotic factor. Abiotic factor means by wind, by air, by water. It dispersed from here to there, that is called the cross pollination. And some adaptation in self pollination, some adaptation for the self pollination in the flower are given below. Adaptation for self pollination. Adaptation for self pollination. अब फ्लावर में कुछ ऐसे एडाप्टेशन होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फेवरेबल होते हैं, जैसे होमोगैमस या होमोगैमी. इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर मेच्योर इन अ सेम टाइम. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मेच्योर इन अ सेम टाइम. दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड द होमोगैमी. होमोगैमी मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मेच्योर इन अ सेम टाइम. नेक्स्ट इज कॉल्ड द क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमस का मतलब ये होता है कि मेल
and female reproductive part are enclosed inside the flower. Enclosed inside the flower for the figure, this one. This is the petal. Male and female reproductive are present inside the, covered with the petal. So the pollen grain are dispersed from here to there. That is the adaptive nature of the self-pollination. And casmogamous. The flower is open, male and female are in the same plant. Flower is open in condition, that is called the casmogamous. Next example is the genocarpy. Genocarpy is the example of the groundnut. In case of groundnut, this is the thalamus, this ovary, style, stigma. In that condition, attachment of the ovary with the thalamus, that is called the pedicle. Pedicle means it attachment from the ovary with the thalamus. And in that condition, after fertilization, these pedicles are enlarged in size and it start to move towards the downward direction, and these ovaries convert into fruit. It is a good example of the groundnut. That means जीनोकार्पी, जीनो मतलब टूवर्ड द ग्रेविटी, कार्पी मतलब फ्रूट का फॉर्मेशन होना, ग्रेविटी की तरफ मूव करके इनसाइड द सॉइल फ्रूट का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड द जीनोकार्पी. नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉल्ड द मिराबिलिस. इन केस ऑफ मिराबिलिस, एंथर आर बेंड टू ऑन द स्टिग्मा, मतलब एंथर स्टिग्मा की तरफ बेंड करते हैं, एंड डस्टिंग ऑफ pollen grain on the stigma. Dusting of pollen grain on the stigma, that is example of the mirabilis. And vinca rosea. In case of vinca rosea, this is called the carpel, this one is called the stamen. Carpel, the style are enlarged in size, and anther disperse the pollen grain on the stigma, and self-pollination will be occur. Next is called the Solanum tuberosum. Solanum tuberosum is a potato, simple potato, common name is the potato. In case of Solanum tuberosum, the stigma are coiled around the anther. Simple, this is the anther, and stigma are coiled around the anther. So the self-pollination will be takes place. So there are some adaptation in self-pollination. कुछ ऐसे फ्लावर में इस तरह के एडाप्टेशन होते हैं जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सकते हैं. तो इट इज एडाप्टिव नेचर ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. ओके गाइस, थैंक यू.